right? 12 million means 1 crore 20 lakh people. 1 million means 10 lakh, right? Then 12 million means 1 crore 20 lakh people work each day with SAP solution, right? More than 25 industries using SAP, right? Yes or no? More than 41,200 customers in SAP, 1,21,000 SAP installations. So this is the introduction of SAP, guys. So you can see ERP first. ERP stands for Enterprise Resource Planning, right? It is a software that manages company's financial. Company financial means all these things, right? Business transaction, general entry, general ledger, trial balance, financial statement, trading, and P&L. With the help of business transaction, we prepare the general entry. With the help of general entry, prepare the general ledger, and with the help of general ledger, we'll prepare the trial balance, and with the help of trial balance and adjustment, we'll prepare the balance sheet, trading, and P&L. So these all things are included in company's financial, right? Yes or no? So next, ERP manages manufacturing and production activity, supply chain and operation. And last, ERP manages HR. So work of HR is conducting the entries for the candidates, right? Providing the training for new candidates into the payroll and salary process. So they will record in one system, right? So like SAP, HR and all. So next, SAP introduction. SAP is a system application production data processing. It is German-based company, right? It was started in 1972 by 5 former IBM employees, ex-IBM employees in 1972. 12 million people work each day with SAP solution, right? 1,21,000 SAP installations, more than 1,500 SAP partners, right? More than 25 industries like pharma, construction, media, automobile, manufacturing, right? Construction. So more than 25 industries now using SAP. More than 41,200 customers in SAP in more than 120 countries. And it is the third largest software vendor in the world. First one is Microsoft. Third one is SAP. Do you know Microsoft, guys? Yes or no? Yes, sir. Yes. Monali. Sorry. Yes, yes. Yeah. Yes, yes. Who is the owner? Owner? Tell me, Prathamesh, Monali. Microsoft को पता नहीं आपको? Owner? Bill Gates, right, guys? Yes. Yeah. So this is the introduction of ERP and SAP, right? So companies financially includes all these things. So उनको कोई तो system में record करना पड़ेगा ना, business transaction entries, generation, trial balance, balance sheet, trading. So that's why they are using ERP based software like SAP. Yes or no? Then supply chain operation, manufacturing, production activity में क्या है? Do you know Praj company? This company produces CNG gas, right? Yes or no? So daily basis पे कितना CNG produce होता है? उनको कोई तो system में record करना पड़ेगा. That's why they are using ERP based software. Yes or no? तो आज कितना प्रोड्यूस किया गैस, राइट? उनको कोई तो सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, ऐसा ना? सो ईआरपी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, उसमें एसएपी, टैली, ओरेकल, पीपलसॉफ्ट कंपनी यूज करते हैं. सो यू नो सीएनजी लॉकडाउन, इन सीएनजी लॉकडाउन प्राइस सीएनजी गैस पर केजी 65 राइट, बट नाउ इट्स स्टिल 90. इतना क्यों इंक्रीज हुआ? एनी रीजन गाइस? बिकॉज पेट्रोल की भी प्राइस बढ़ रही है, ऐसा ना? आपने देखा रहेगा इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑल आर मार्केट में. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है टाटा मोटर्स को, राइट? जैसे कि पेट्रोल पंप के सेटअप, जैसे इलेक्ट्रिक सेटअप बन रहा है ना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेटअप, राइट? ऐसा ना? तो उनको कोई तो सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, इसलिए वो ईआरपी बेस्ड सिस्टम लाइक एसएपी, ओरेकल, पीपलसॉफ्ट एंड टैली का यूज करते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि जो कितनी कंपनी में फाइनेंशियल हुए, कितनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हुई, राइट? एचआर क्या करेगा? कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया, राइट? कितने कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, पेरोल प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस. सो उनको कोई तो सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर लाइक एसएपी. यस और नो गाइस? Any doubt in introduction to ERP in SAP? No doubt, sir. Yeah. Next, there are 3 job profiles in SAP: SAP consultant, support consultant, and end user.
and SAP project, implementation project, supporting project, and rollout project. So first is implementation project. Do you know HCL company? Yes. Yes. Yeah, Yes. HCL is IT company, right? Suppose they are using ERP based software, Tally ERP based software, right? And they wanted to shift from Tally to SAP. But first, they will take the permission from their client, right? वो client के साथ kick-off meetings करेंगे, cost calculation, because Tally is easily affordable in the market, right? But SAP is expensive software compared to Tally. So cost देखेंगे कितने लगेगी from Tally to SAP में जाने के लिए. Meetings करेंगे, kick-off meetings client के साथ, right? Because IT सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, राइट? आईटी कंपनी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, क्लाइंट कंपनी को पे करते हैं और कंपनी एम्प्लॉयज. सुनो गाइस, सो स्पॉटिफाई इज अ म्यूजिक कंपनी, राइट? तो एचसीएल सपोज स्पॉटिफाई के लिए वर्क करता है, तो उनको सब टैली टू एसपी में जाने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन, राइट? बिकॉज अप टू 2 ईयर इंप्लीमेंट कर सकते प्रोजेक्ट फ्रॉम नॉन एसपी सॉफ्टवेयर टू एसपी सॉफ्टवेयर, मीन्स टैली सॉफ्टवेयर टू एसपी सॉफ्टवेयर, मीन्स Oracle to SAP, PeopleSoft to SAP, yes or no? Means legacy system to SAP system. So legacy system is non-SAP system. So non-SAP system to SAP system implement करेगा. Who will implement? SAP consultant implement the project from non-SAP system to SAP system. Means all entries, posting, bank reconciliation, finance statement, tax calculation. It's all things implement from non-SAP system to SAP system. और ये SAP consulting करता है. That is the implementation project, guys. Any doubt in implementation? Yes or no? No, sir. Are you getting No. it? Yeah. Monali, Sukesh, Rohit, Prathamesh. No, sir. Yeah. No doubt. Yeah. So next is supporting project. It is a post-implementation activity. Supporting project is a post-implementation activity, right? It is a post-implementation. Means if, do you know end user, right? End user is accountant. Do you know accountant? Yeah, yes, sir. Yes. अकाउंटेंट का क्या रोल रहता है? जनरल पोस्टिंग करना, परचेस इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, राइट? वही करते हैं ना अकाउंटेंट, राइट? Yes. So after completion of implementation, if accountant means if end user is unable to post any accounting entry in SAP, unable to generate any accounting report in SAP, at that time support consultant needs to be supported to the end user. That is the supporting project. Means project implement होने के बाद, right? If accountant means end user को कोई problem आता है, entries पोस्ट करते टाइम एसएपी में, पोस्टिंग करते टाइम, राइट? बैंक रिकंसिलिएशन, फाइनल कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई सिस्टम टिकट इशू पता रहेगा ना आपको आईटीज में, राइट? आप तो एक दो कैंडिडेट्स इधर, ये सुनो, जब आपको कोई सॉफ्टवेयर एरर आता है तो टिकट इशू करते हैं ना, Yes. तो कंसल्टेंट, सपोर्ट कंसल्टेंट का वही रोल है कि अकाउंटेंट को सपोर्ट करना उस टाइम, राइट? या सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ implementation and after completion of training to the end user, if end user means accountant is unable to post any entry, unable to generate any accounting report in SAP, right? Unable to create any general ledger account in SAP, at that time support consultant needs to be supported to the accountant, means end user. That is the supporting project. Are you getting it? Yes or no? Yes. Yes. Yeah. Yes, sir. So last one is rollout. What is rollout? Do you know Kia Motors? Kia Motors company. Do you know, guys? Yes. Yeah. So Kia Motors is basically क्या करती है कंपनी? Any idea? नहीं पता. मोटर व्हील सप्लाई करता है सर. Right. Yeah. तो किधर की है कंपनी? No idea. Yeah, Korean company, right? Yes or no? South Korean company, right? Suppose Kia Motors is using SAP, right? Suppose they are using SAP and they wanted to shift from Korea to India, but certain problem will be arise, guys, right? Korean taxation and Indian taxation is different. Korean currency and Indian currency is different, right? Korean rules regulation and Indian rules regulation is different. At the time, rollout projects consider the picture, right? Yes or no? तो ये problems arises हो सकते हैं ना, guys? Yes or no? Are you getting? Suppose XYZ कंपनी यूएस में, राइट? और उनको यूएस टू यूके शिफ्ट होना है, तो यूएस करेंसी इज डिफरेंट, यूके करेंसी क्या, यूएस का डॉलर, यूके का पाउंड, यस और नो? यूके का टैक्सेशन, यूएस का टैक्सेशन डिफरेंट, यूके के रूल्स और यूएस के रूल्स इज डिफरेंट, राइट? Yes. उस टाइम रोल आउट प्रोजेक्ट पिक्चर में आता है. मींस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री प्रोजेक्ट शिफ्ट करना है तो रोल आउट प्रोजेक्ट का यूज किया जाता है इससे. Okay.
So these are the three job profiles. SAP consultant implement करता है project from non-SAP system to SAP system means legacy system to SAP system. Support consultant help करता है end user को in supporting. If end user को कुछ भी problems आते हैं at the time posting, at the time of generating report, तो उस time support consultant end user को help करता है. That is supporting. And rollout project ship करना है from one country to another country. That is rollout project. So any doubt in SAP project, guys? So introduction of SAP project. Any doubt? No, sir. Yeah. तो फर्स्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ईआरपी, राइट? ईआरपी में क्या होता है? कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, राइट? एसएपी फिको. एसएपी ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन किसके लिए? एसएपी एमएम, राइट? ऐसा क्यों? एमएम पता रहेगा ना, मेटल मैनेजमेंट, राइट? जिनका कंपनी फाइनेंशियल कौन कर सकता है? जिसका एमबीए फाइनेंस कॉमर्स बैकग्राउंड है, राइट? ऐसा ना, बीकॉम बीबीए वाले. देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एसएपी एमएम मेटल मैनेजमेंट. Yes, mechanical engineer, MBA marketing, or HR, MBA HR वाले HR actor, means SAP HR course. So I'm just so ये पूरे chapter से guys introduction to ERP, SAP, enterprise structure, financial accounting, general ledger, accounts payable, account receivable, asset accounting. तो हम बेसिक एक प्रैक्टिकल देखते चले. So what is company, guys? What is company in SAP? Company means company represents, guys, group, right? Yes or no? Company represents group, and company code represents organizational unit of that group, right? Company code means organizational unit, and company means group. So Tata Group is a company, right? And Tata Motors, TCS, Starbucks, Tata Communication, right? These are the organizational units of Tata company. Yes or no? Yes. So Tata is a company, and Tata Motors, TCS, Tata Communication, right? These are the company codes of Tata company. Are you getting it? Yes or no? Yes. Yeah. Here you can see. थोड़ा इसका practical देखते, right? So company represents group. It contains up to 6 characters. It is alphanumeric. Alphanumeric is optional. And company can have any number of company code. Means a group can have any number of organizational unit. Yes or no? मतलब जैसे Reliance Group है, right? So Reliance Group में क्या आता है? Reliance में Jio, right? Yes or no? Then Reliance Petroleum, Reliance Mart, Reliance Power. Yes or no? So these are the organizational units of Reliance company. So Reliance is a company, Reliance Mart, Reliance Power, Reliance Petroleum, these are the company codes of Reliance company, guys. Yes or no? So उस company के लिए up to 6 character देंगे. 4, 5 is allowed, but 7 is not allowed, right? Up to 6 is allowed. And it should be alphanumeric is optional, sorry. Alphanumeric is optional. And a company can have any number of organizational units. So company code is an organizational unit, and it contains up to 4 character. So this is a company and company code. Are you getting it? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So कंपनी कैसे क्रिएट करना है, I'm just showing. So उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड रहता है, राइट? सपोज अभी कंपनी का हम फर्स्ट देखते हैं OX15. ये सिस्टम डिफाइंड रहते हैं, राइट? मतलब कंपनी ने क्रिएट किया ऑलरेडी, राइट? OX15 इज अ टी कोड, ट्रांजैक्शन कोड फॉर क्रिएटिंग द कंपनी, राइट? सो OX15 is a transaction code for defined company. Screen is visible, yes or no, guys? Yes. Yeah. 1 minute, yeah. ये देखिए सर्च बॉक्स रहता है, राइट? दिस इज बटन फॉर सेव, दिस ग्रीन बटन फॉर बैक, दिस येलो फॉर एग्जिट एंड रेड फॉर कैंसिल, राइट? सो हमें कंपनी डिफाइन करनी, राइट? यस और नो?
अभी टाटा कंपनी हमें डिफाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, मतलब वन बाय वन, राइट। तो फर्स्ट कंपनी का नेम, सो हम क्लिक ऑन न्यू एंट्री करेंगे, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं ना एसएपी में, ऐसा नो। सो क्लिक ऑन न्यू एंट्री करना। सो मैंने आपको बोला था अप टू 6 कैरेक्टर इज अलाउड, ऐसा नो। इट कंटेन अप टू 6 कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक इज ऑप्शनल, तो आपको 6 कैरेक्टर देना है। जैसे अभी टाटा कंपनी, अप टू 6 कैरेक्टर, तो ये टाटा 412, राइट। स्ट्रीट, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, सिटी पुणे, कंट्री इंडिया, राइट, ये सब नो। तो इंडिया के लिए IN, तो अब सर्च बॉक्स में लैंग्वेज EN, इंग्लिश, एंड करेंसी रुपीज INR, ये सब नो गाइस। This software is SAP only, no? यस यस यस। INR मीन्स रुपीज, यस सर नो। सो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, फर्स्ट वन बाय वन कंपनी, अप टू 6 कैरेक्टर, कंपनी नेम टाटा कंपनी, सिटी पुणे, कंट्री IN, लैंग्वेज EN, करेंसी INR। इस बेसिक आपको जस्ट प्रैक्टिकल एक दिखा रहा हूं, राइट, यस सर नो। सो एनी डाउट गाइस? No, sir. मोनाली, कुछ डाउट? सुकेश, प्रथमेश, एनी No, डाउट? sir. अंजलि? No. सो 3 प्रोसेस भी रहते, राइट। एसएपी में 3 प्रोसेस है, P2P प्रोसेस, O2C प्रोसेस, R2R, वो भी हम देखेंगे जस्ट। ये देखो P2P, 1 मिनट। ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड वेंडर, वेंडर मीन्स जो कंपनी को सप्लाई करता है, राइट, सप्लायर, वेंडर इज लाइक सप्लायर, राइट, यस और नो। सो ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड सप्लायर मीन्स कंपनी एंड वेंडर इज P2P प्रोसेस। उसका अकाउंट्स पेबल भी जॉब प्रोफाइल है, राइट, एज ए एंड यूजर का जॉब प्रोफाइल है। सो नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल एक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर मीन्स O2C प्रोसेस, अकाउंट रिसीवेबल जॉब प्रोफाइल। कंपनी अगर वेंडर से क्रेडिट पे परचेस करते हैं, हम उसे क्रेडिटर बोलते हैं ना, यस और नो, जो बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी पे आते हैं, यस और नो। Yes. और Right. ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड डेटर, डेटर Data. मतलब कौन, जो कस्टमर्स, लेकिन हमने उसको क्रेडिट पे सेल किया है, Okay. राइट। क्रेडिट पे सेल किया तो डेटर्स बोलेंगे, Okay. और कैश में किया तो कस्टमर बोलते हैं हम, राइट। अगर कोई भी कंपनी ने Right. सेल किया किसी भी कस्टमर को, हम कस्टमर ही बोलते हैं, राइट। लेकिन कंपनी ने उसको क्रेडिट पे सेल किया तो हम डेटर्स, राइट, क्योंकि उसे पैसे आने, राइट, वो इसलिए जी। करंट एसेट में शो होते हैं, ऐसा ना, उस ईयर में आने वाले ना, करंट एसेट, करंट ईयर में पैसे आने वाले, सो करंट एसेट में शो होते हैं। क्रेडिटर्स जिससे कंपनी ने क्रेडिट पे परचेस किया है, सो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। कंपनी जिससे क्रेडिट पे परचेस करती है वो क्रेडिटर, और कंपनी जिसको क्रेडिट पे सेल करती है वो डेटर्स। सो ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर मींस कंपनी एंड सप्लायर मींस कंपनी एंड वेंडर इज P2P प्रोसेस, और अकाउंट पेबल उसका जॉब प्रोफाइल। और ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर मींस कंपनी एंड डेटर इज O2C प्रोसेस, ऑर्डर टू कैश, अकाउंट रिसीवेबल। ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। P2P. What's the full form of P2P? Procure to pay process. Procure to be process. Procure to pay. Okay, To procure. pay. So procure to pay process is essential for purchasing activity, right? Because company इधर purchase करे ना vendor से, yes or no, अंजलि? Yes. So procure to pay process is essential for purchasing activity in the company. It is essential and useful to buying of the material or service. मतलब जो परचेस कर रही है कंपनी उसके रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको हम P2P प्रोसेस बोलते हैं। और ऑर्डर टू कैश, it is a business process. It is set up that involves receiving, fulfilling the customer's requirement for goods and services. मतलब कंपनी इधर सेल कर रही है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, yes or no? So transaction between company and customer is order to cash, and transaction between company and vendor means company and supplier is
P2P प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस हम दोनों देखेंगे, राइट? जैसे कि अभी P2P में क्या रहेगा, फर्स्ट कंपनी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट रहता है, राइट? जैसा अभी टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स को क्या, टाटा मोटर्स क्या सेल करती है? सुकेश, अंजलि, टेल मी गाइस। टाटा मोटर्स तो बहुत सारी चीज सेल करते हैं सर एक बताओ ना। हाँ, गाड़ी भी सेल करते हैं, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका है, यस। लाइक तो एरो गाड़ी भी उनके, वो राइट? भी। तो उनको जी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो लगेगी, यस और नो गाइस? ये सर। Yes. या तो कंपनी का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट रहता है, राइट? तो वो क्या करेगा, प्लान करेगा मटेरियल की, कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, राइट? यस और नो? So Yes. material requirement planning is a system for calculating the material and component needed to manufacturing a product. Yes or no? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कंपनी का प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान करेगा। उसके बाद परचेस रिक्विजिशन, कंपनी का परचेस रिक्विजिशन नोट बनेगा, राइट? व्हाट इज परचेस रिक्विजिशन? इट इज लाइक अ डिमांड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल फॉर अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट विद इन टाइम। नो एक्सटर्नल थर्ड पार्टी इन ऑल इन परचेस रिक्विजिशन, राइट? मतलब क्या कि एक डिमांड किया जाएगी, हमें इतने इतने क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए इस टाइम में चाहिए, दैट इज परचेस रिक्विजिशन। एक कंपनी का परचेस रिक्वायरमेंट प्रेस करेगा, राइट? Then request for quotation. Once we collect all requirement, then purchase department will send the request to minimum 3 vendors. Suppose Tata Motors ने रॉ मटेरियल चाहिए, राइट? टाटा मोटर्स को तो ABC को रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड किया, राइट? 1 लाख रुपीज का मटेरियल चाहिए, 10,000 क्वांटिटी, तो एक क्वांटिटी कितने में? टेल मी। 10,000 क्वांटिटी इन 1 लाख रुपीज, राइट? सो टाटा मोटर्स के परचेज डिपार्टमेंट ने वेंडर्स मतलब सप्लायर ABC को सेंड किया ये कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कि हमें 1 लाख रुपीज में 10,000 क्वांटिटी चाहिए, तो एक क्वांटिटी कितने, एक क्वांटिटी की प्राइस की 10 रुपीज ना, जैसा ना। Yes. सो आपको तीनों भी वेंडर ABC भी 1 लाख के लिए रेडी हो गए, राइट? सो आप मुझे बताओ कौन सा आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे? टेल मी गाइस। सो नेक्स्ट इज वेंडर सिलेक्शन। आपका क्या है उस पे व्यू है, राइट? मुझे टेल मी, बताओ। प्राइस सेम दे रहे, राइट? एक ही टाइम पे दे रहे, प्राइस भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, राइट? क्वालिटी भी सेम दे रहे, तो आप कौन सा वेंडर सिलेक्ट करेंगे? ऐसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते, राइट? यस और नो? अंजलि, Huh. टेल मी। Can you repeat once again? यस, टाटा मोटर्स, राइट? टाटा मोटर्स, Yeah. टाटा मोटर्स ने 1 लाख रुपीज का मटेरियल चाहिए टाटा मोटर्स को 10,000 क्वांटिटी, राइट? Right. ABC 3 वेंडर्स को सेंड किया रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में कि हमें 1 लाख रुपीज 10,000 क्वांटिटी में, सॉरी 10,000 क्वांटिटी 1 लाख रुपीज में चाहिए, राइट? Okay. सो टाटा मोटर्स A से करेंगे परचेस, B से या C से? सो नेक्स्ट स्टेप इज वेंडर सिलेक्शन। तो आप किस बेसिस पे वेंडर सिलेक्ट करेंगे? Like quality, then क्वालिटी सेम है सभी की, क्वालिटी सेम, apart from it, price. प्राइस सेम है ना, 1 लाख रुपीज, राइट? Mhm. टाइम भी वो जो अपने टाइम सेम, टाइम सो ABC में जिसका मार्केट में रेपुटेशन गुडविल है, Right. जिसका पास्ट एक्सपीरियंस लग रहा है, Right. so with the help of past experience and goodwill you have to select the vendor. With the help of past experience and credibility of the vendor, we have to select a vendor who can fulfill the requirement at best possible price. Are you getting it? Yes or no? Yes. So उसको हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सेंड करने में तीनों को वेंडर सिलेक्शन करेंगे। सो ए को हमने सिलेक्ट किया बिकॉज उसका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस एंड गुडविल अच्छे, राइट? तो उसके बाद परचेस ऑर्डर हम उनको इशू करेंगे ए को, यस और नो? तो ये पूरा P2P हम देखेंगे इसे लेक्चर्स में, और उसका प्रैक्टिकल भी जो प्रैक्टिकल रहता है, राइट? SAP में वेंडर्स का मास्टर डाटा क्रिएट करना, राइट? सो ये प्रैक्टिकल भी देखेंगे वन बाय वन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एनी डाउट? No, sir. ऐसे O2C में वैसे रहेगा पूरा प्रोसेस में। O2C में क्या रहेगा कि
कंपनी, ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी और कस्टमर, कस्टमर फर्स्ट इंक्वायरी करेगा प्रोडक्ट के बारे में, ये सुनो, देन कंपनी उसको कोटेशन देगी, ये सुनो, उसके बाद सेल्स ऑर्डर, कंपनी सेल्स ऑर्डर जनरेट करेगी, उसके बाद पोस्ट गुड्स इशू, वेयर हाउस से गुड्स पैक करके कस्टमर के एड्रेस पे सेंड किया जाएगा, डिलीवरी किया जाएगा, बिल, देन उसे पेमेंट, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, और लास्ट में कस्टमर का फीडबैक दिया जाएगा, राइट। कस्टमर फीडबैक्स के टूल्स गूगल फॉर्म, यूजर स्नैप, हॉटजार, वेरियस टूल्स है, राइट। सो कुछ डाउट आपको इसमें? No, no. Actually, sir, I have one question. One more question. The thing is, like, from which lectures means we can start for the interviews? I can start giving interviews. From P2B, accounts payable, general generation. मीन्स वो कौन सा लेक्चर रहेगा? मीन्स लाइक अभी 3 months में हम लोग Yes, yes. 15 days के बाद चलो. 15 days के बाद. Yes. ओके. और स्टडी किट मीन्स मिलने वाला कैसे रहेगा स्टडी किट? या मेरा भी और क्लास का भी, देखो मेरा जो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, राइट, आपको दिखा ना मैंने, राइट, हाँ, पूरा लेमन लैंग्वेज में, राइट, मैंने इंट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए, आप देख सकते हैं। ये नोट्स हम लोग को मिलेंगे, राइट? यस यस यस, ओके, ये पूरे नोट्स, राइट, और पीपीटी भी है जो 1 by 1 स्टेप्स है, उसमें आप सेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। ओके, अभी मेरा कैसे, मेरा 4 years का एक्सपीरियंस जो है वो ट्रैवल में है, बट पैसेंजर रेवेन्यू अकाउंटिंग में ही है। अच्छा। तो मैं ये मीन्स आफ्टर 15 days मीन्स मुझे इतना ये आ सकता है क्या मीन्स में इंटरव्यू? यस यस, अभी P2B प्रोसेस में कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो, क्लास तो प्लेसमेंट देता है, लेकिन मैं खुद भी आपको प्रोवाइड करूँ। मैं खुद इन्फोसिस में, IBM में काम किया है। ओके ओके, इन्फोसिस में अभी मैं आपको देख सकता हूँ कि 1 मिनट, अभी लास्ट मंथ में दिसंबर में कॉग्निजेंट में अच्छा, लेके 4,20,000 में, ऐसा है। ये P2P के लिए था? यस, P2P के लिए 4,20,000। ओके, बिकॉज मेरा ऑलरेडी अभी 2 months का मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया, तो मेरा हो गया 2 months ऑलरेडी। तो मैं तो अभी क्या आपका जॉब नहीं है? अभी जॉब नहीं है। अरे, तो 10-15 डेज के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं ना इंटरव्यू देने, इसलिए मैंने P2B स्टार्ट कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा था, राइट, उसका थ्योरी ऐसा ना गाइस। ओके फाइन, यस गाइस, ठीक है, आप क्लास से कांटेक्ट करो इसे, ठीक है? ओके ओके फाइन। जो अभी आपने नंबर दिया था वो आपका नंबर था क्या? यस यस यस, मेरा है। ओके ओके फाइन फाइन, ओके गाइस। yeah.